Good afternoon, everybody, and I welcome you all to this new module which we are starting today for SQL. And let me first of all introduce myself. I will be your mentor for this module. My name is Rajiv, and I have around 18 years of corporate experience. In the past, I've worked with organizations like Google, IBM. For the last 2.5 years, I have worked with, I'm working as an academic into academics, and I'm teaching subjects like business analytics, data science, Power BI, Tableau, SQL, project management. So these are the subjects I'm teaching. So let me share my screen. So SQL is a structured query language. First of all, you have to be very sure it is a programming language. What kind of programming language? It's a query language, right? जैसे हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, कोई लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश, हिंदी और एनी अदर लैंग्वेज. व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट लैंग्वेज? टू कम्युनिकेट. मैं अपनी बात आप तक पहुंचाऊं, आप अपनी बात मुझ तक पहुंचाएं, राइट? उसी लैंग्वेज की तरह जैसे इंग्लिश होती है, हिंदी होती है, उसी तरह से एक और लैंग्वेज होती है जिसका नाम है SQL. फुल फॉर्म इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. और हर लैंग्वेज का एक पर्पस होता है, करेक्ट? इस लैंग्वेज का पर्पस क्या है? फॉर स्टोरिंग, मैनिपुलेटिंग, रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम इन ए रिलेशनल डेटाबेस. ठीक है. अब सबसे पहले कुछ और चीजें समझते हैं. लेट्स से हमारे पास और भी लैंग्वेजेस होती हैं, राइट? कोई और लैंग्वेज का नाम बताओ. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या नाम है? जैसे आपने SQL बोला, SQL इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. पर्पस क्या है? इसी तरह आपका पाइथन होता है, जावा है, सी है, C++ है. दीज आर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. बट क्या SQL को हम क्या यूज कर सकते हैं सॉफ्टवेयर बनाने के लिए? SQL फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट? नो सर. कैन वी यूज SQL फॉर वेब डेवलपमेंट? वेबसाइट बना सकते हैं SQL से? नहीं. तो इसीलिए पर्पस हर एक लैंग्वेज का डिफरेंट होता है, ठीक है. जैसे पाइथन को हम किस लिए यूज करते हैं? जनरली वी यूज इन डेटा साइंस. सबसे पहले डेटा साइंस के लिए यूज कर सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हो, राइट? काफी चीजों के लिए यूज, वेब डिजाइनिंग के लिए भी कभी कभी यूज होता है. जावा मेन पर्पस वेब डिजाइनिंग, राइट? सी का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, C++ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है. इसी तरह SQL का मेन पर्पस है जो भी डेटा हमारा डेटाबेस में पड़ा हुआ है उससे इंटरैक्ट करना, राइट? उसको डेटा को हेल्प करना, डेटा इंसर्ट करने में. अब डेटा से रिलेटेड क्या क्या चीजें कर सकते हैं, क्या क्या जरूरत होती है हमें? डेटा को इंसर्ट करना आना चाहिए. जो डेटा इंसर्टेड है उसको रिट्रीव करना आना चाहिए. जो डेटा है उसको मैनिपुलेट करना आना चाहिए, डिलीट करना आना चाहिए, चेंज करना आना चाहिए. सो डेटा से रिलेटेड जो भी हमारे मैनिपुलेशन है, जो RDBMS में डेटाबेस में रखा हुआ है डेटा, उसको करने के लिए हम एक लैंग्वेज सीखते हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. इज दैट क्लियर सो फार? तो इसीलिए इस पर्पस है हमारा इसका स्टोरिंग, मैनिपुलेटिंग एंड रिट्रीविंग. स्टोरिंग का क्या मतलब है? डेटा को हम इंसर्ट कर पाए. मैनिपुलेटिंग का मतलब है जो डेटा ऑलरेडी डेटाबेस में है उसको मैनिपुलेट कर पाए, चेंज कर पाए, और जो बड़ा हुआ है उसको रिट्रीव कर पाए. ठीक है. अब एक और हमने टर्म यूज करी और उसका नाम है RDBMS. अब ये क्या चीज? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो RDBMS की फुल फॉर्म होती है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. अब इससे पहले हम समझते हैं कि डेटाबेस क्या होता है. व्हाट इज ए डेटाबेस? Database management system. Could you please repeat your answer? The database management system, it is a full form of database where we can store the data. Okay, correct. So database is nothing where you have interrelated tables. Collection of related tables is called as a database, right? जो बहुत सारी टेबल्स को हम कलेक्शन बोलते हैं ना, रिलेटेड टेबल्स, उनको हम क्या बोलते हैं? डेटाबेस. तो मल्टीपल टेबल्स मिला के हमें क्या बनाती हैं?
एक डेटाबेस को बना, ठीक है। जैसे ह्यूमन रिसोर्स, एक डेटाबेस बना दिया। ह्यूमन रिसोर्स के अंदर क्या क्या हो सकता है, सैलरी की टेबल होगी, एक एम्प्लॉय की टेबल होगी, ठीक है, पे हिस्ट्री होगी, किसी के अंदर डेजिग्नेशन की इंफॉर्मेशन होगी, हिस्ट्री होगी, कब कब हमने अप्रेजल दिया, सैलरी इंक्रीज करी डिक्रीज करी। तो ये सारी टेबल्स को मिला के एक डेटाबेस बना दिया, एचआर डेटाबेस। सो व्हाट इज डेटाबेस इन वेरी लेमन लैंग्वेज? डेटाबेस इज नथिंग, इट इज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल्स। कुछ उनमें आपस में रिलेशन होना, रिलेटेड होना चाहिए। इज दैट क्लियर? अब मैंने एक और मैंने वर्ड यूज किया, टेबल। अब टेबल क्या होता है? व्हाट इज टेबल? So table where we intersect the row and columns. Very good. So table is when we store the data in the form of rows and columns, right? So data in the form of rows and columns. In SQL, we use different terms. What are the terms which we use in SQL? For rows, we use a term called as record. Record and field. And instead of column, the term which we use is called as field. Is that clear? So when I say record, it means I'm referring to rows. When I say field, I'm saying column. तो हम इनको यूज करते हैं SQL के केस। So take collection of table is a database, ठीक है। अब एक और टर्म है जिसका नाम है database management system. What is database management system? अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, सिस्टम जहां पे आ गया इसका मतलब क्या है? वो एक सॉफ्टवेयर है जो सॉफ्टवेयर उस डेटा को स्टोर करने में हेल्प करे, उस टेबल्स को बनाने में हेल्प करे, स्टोर करने में हेल्प करे, उसको क्या बोलते हैं हम? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये क्या चीज है? सॉफ्टवेयर, ठीक है, जिसको यूज कर, जिसके अंदर हमारे टेबल्स रखी हुई है, डेटाबेस रखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह अगला टर्म है रिलेशनल डेटाबेस। अब डेटाबेस हमने देख लिया, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल्स। तो रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस इज ए डेटाबेस वेयर टेबल्स आर linked to each other on the basis of some common field. मल्टीपल टेबल्स हैं और वो आपस में रिलेटेड हैं, कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ किसी कॉमन फील्ड के थ्रू, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, लेट्स से दिस इज माय कस्टमर टेबल, ओके, एंड दिस इज, लेट्स से दिस इज माय कस्टमर. Let's say this is another table and that is called as sales table. So customer table has information about customers and sales has information about sales. So customer has a column, let's say CID. What is CID? Customer ID. Okay, and in the sales table, I also have a column called as CID. So I can connect these two tables together on the basis of the common field. What is that common field? CID. So this relationship I can connect. I can create a relationship between the customer table and the sales table. And this is called as a relational database. And this concept we can replicate. I can connect 10 tables. I can connect 20 tables. I can even connect 50 tables. Right? What is the advantage? Advantage is scalability. Scalability means if you have to store a huge amount of data, I don't need to put everything in one table. मैं अलग अलग टेबल्स में डेटा को रख सकता हूं और आपस में उनको कनेक्ट कर सकता हूं. एंड बिकॉज इफ यू सी, जैसे हमने एक्सेल यूज करते हैं, एक्सेल में हमें सारा डेटा एक टैब में रखना पड़ता है, एक शीट में रखना पड़ता है, ठीक है. लेकिन एक्सेल इज नॉट सफिशिएंट फॉर स्टोरिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा. छोटे प्रोजेक्ट के लिए एक्सेल ठीक है, छोटे डेटा के लिए. बट व्हेन यू आर जनरेटिंग बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ रोज ऑफ डेटा एवरी डे, imagine a company like Google, Amazon, how much data they are generating on a daily basis.
So the normal Excel is not sufficient. So you need something which can store huge amount of data. And that some of the software is one of the way you can store it. You can put data in various different tables, and then you can connect them together. And when you connect them together, that database becomes a relational database. Is that clear? तो डेटा रिलेशनल क्या हो गया जब टेबल्स हमारी आपस में कनेक्टेड. So where you can say that relational tables which are related to each other, Kanak, you are trying to annotate my screen. Tables which are related to each other on the basis of common field. अगर कॉमन फील्ड नहीं होगा तो क्या हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं टेबल्स को आपस में? देन इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? सो वी नीड ए कॉमन फील्ड. और जो सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं टू इंप्लीमेंट द रिलेशनल डेटाबेस, उसको क्या बोलते हैं हम? RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ठीक है. अब RDBMS के भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं मार्केट में, राइट? फॉर एग्जांपल, वन ऑफ द software which we RDBMS which we will use in our case, that is SQL Server. What RDBMS we will use? SQL Server. This is from which company? From Microsoft. Okay. Similarly, we have other products in the market, like we have MySQL. MySQL is different from SQL Server. It is from different company, different vendor, but this is also RDBMS. Then you have Oracle. Very good. So Oracle is also in RDBMS. Have you heard of it? Yes, sir. Then from IBM, we have a RDBMS called as IBM DB2. Okay. And then MS Access. Have you heard of MS Access? Right. So ये सारे क्या चीजें? ये सारे के सारे RDBMS. ठीक है. और भी बहुत सारे हैं हमारे पास. ठीक है. अब let's see the question. Okay, no problem, Kanak, no problem. So far clear. बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं. हम कौन सा सीखने वाले हैं? हम कौन से पे काम करेंगे? SQL Server. So SQL Server is different from MySQL. MySQL is a different company. SQL Server is from Microsoft. हम माइक्रोसॉफ्ट का SQL सर्वर पे काम करते हैं. देखो, पॉपुलैरिटी के हिसाब से बताता हूं. बेस्ट SQL सर्वर इज बेस्ट. व्हाई? बिकॉज इट इज फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट एंड जनरली वी डोंट फेस एनी compatibility issues with SQL सर्वर, बिकॉज जनरली हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं? मैक्सिमम लोगों के पास विंडोज होते हैं, राइट? तो कॉम्पेटिबिलिटी का चैलेंज नहीं आता. तो SQL सर्वर इज वाइडली यूज्ड इन द इंडस्ट्री. SQL सर्वर के साथ एक और प्रोडक्ट जो ज्यादा पॉपुलर है, Oracle. Oracle भी काफी यूज होता है. ठीक है. वेब डेवलपमेंट के केस में काफी उस पे भी आ रहा हूँ. आई यूज्ड टू वर्क इन Oracle एज वेल. ठीक है. तो अभी उस पे भी आ रहा हूँ. आई विल एड्रेस दैट कुछ. सो फार क्लियर. तो ये सारे के सारे वेंडर, डिफरेंट वेंडर्स कंपनीज के प्रोडक्ट आए. ठीक है. अब आप कहोगे यार सर, मैं तो SQL सर्वर आप सिखाओगे, कल को किसी कंपनी में Oracle पे काम हो रहा है, किसी कंपनी में MySQL पे काम हो रहा है, किसी पे IBM DB2 पे काम हो रहा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज नॉट पॉसिबल टू लर्न ईच एंड एवरी प्रोडक्ट, बट आई विल टेल यू, if you learn SQL, you will be able to work on all the RDBMS, majority of the RDBMS. 95% of the syntax will remain the same. Why? Because जो SQL है वो as a standard has been adopted. It is a standard now. Standard का मतलब क्या है कि सारी कंपनीज को
SQL को फॉलो करना पड़ रहा है. So what is this? So SQL is a standard now. Because of the popularity, so it has been adopted as a standard by ANSI. What is ANSI? American National Standard Institute. इस टाइप से कुछ होता है, ठीक है. तो ये अमेरिका में एक स्टैंडर्ड की तरह अडॉप्ट किया गया है. इस कंपनी इस स्टैंडर्ड की तरह यूज हो रहा है. स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि सारी कंपनीज एसक्यूएल को सपोर्ट करती. तो ऐसा नहीं है कि अगर आप एसक्यूएल लैंग्वेज आज सीखोगे तो सिर्फ आप एसक्यूएल सर्वर पे ही काम कर पाओगे. You will be able to work on MySQL. You will be able to work on Oracle. Why? Because everywhere SQL will be used. लैंग्वेज एक ही है, प्रोडक्ट एक है. जैसे मैं आपसे इंग्लिश में बात कर सकता हूँ, ठीक है. कल को मैं यूएस में गया, वहां भी इंग्लिश में किसी से बात कर सकता हूँ. ऑल द नेशनलिटी डिफरेंट है, बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस क्या है. जैसे स्केड्यूल को क्या बोलते हैं? शेड्यूल. यूके में जाओगे तो कुछ थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, बट बेसिक लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश. थोड़ा सा डिफरेंस वेरिएशन आएगा, थोड़ा सा वेरिएशन आएगा. 95% सिंटैक्स सेम है. अब 5% वेरिएशन क्यों आएगा? क्योंकि सबको अपना स्टैम्प भी तो लगाना है कि मैं ओरेकल हूं, मैं MySQL हूं, मैं माइक्रोसॉफ्ट हूं, मैं IBM हूं. तो वो अपना थोड़ा थोड़ा वेरिएशन डाल देते हैं, बट वो वेरिएशन बहुत ही छोटा सा होता है, 5%. बट 95% कमांड्स आपकी हर जगह चलेंगी किसी भी प्लेटफॉर्म, बिकॉज SQL इज ए स्टैंडर्ड which has been adopted by American National Institute. ठीक है. It is just not a programming language. Why it is such so much popular? क्लियर है? थोड़ा बैकग्राउंड समझ में आ रहा है? ओके. तो SQL you learn, the syntax will work on Oracle as well, on MySQL as well, everywhere. माइक्रोसॉफ्ट को भी जैसे अब SQL बोल दिया, तो माइक्रोसॉफ्ट के जो SQL के वर्जन को हम क्या बोलते हैं? अब वो कहते हैं SQL को भी मैं अपनी तरफ से थोड़ा सा स्टैंप डालूं, अपनी स्टैंप लगाऊं. एक और टर्म यूज होगी जिसका नाम है TSQL. सुना है? अब SQL तो लैंग्वेज है. द फुल फॉर्म ऑफ TSQL इज ट्रांसैक्ट स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. अब ये क्या है? इट इज द SQL ऑफ माइक्रोसॉफ्ट. ठीक है. अब माइक्रोसॉफ्ट ने बोला मैं अपना नाम दे रहा हूं, तो उन्होंने अपना डिफरेंशिएट करने के लिए SQL को क्या बोल दिया? मैं माइक्रोसॉफ्ट के SQL को क्या बोलते हैं? TSQL. व्हाट इज ट्रांसैक्ट SQL. जैसे कोई बोलते हैं ना, अमेरिकन इंग्लिश बोल रहे हो या यूके इंग्लिश बोल रहे हो या ब्रिटिश इंग्लिश बोल रहे हो या इंडियन इंग्लिश बोल रहे हो. इंग्लिश तो इंग्लिश है, पर सबने अपना अपना नाम दे रखा है. ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, राइट. तो SQL तो सेम है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने उसको अपना एक टर्म दिया हुआ है जिसका नाम है TSQL. So what is this? This is the SQL version of Microsoft. SQL version from. तो इसको घबराना नहीं. TSQL कुछ नहीं है, ये SQL है बस, provided by Microsoft. Okay, very good question. So SQL is a language, so it's absolutely free of cost. Okay. Similarly, जो हम डाउनलोड करेंगे SQL सर्वर, this is also free of cost. Okay. No need to pay anything to anyone. ठीक है. थोड़ा क्लियर हो रहा है बैकग्राउंड SQL के बारे में? Okay. Who developed SQL? किसने बनाया था SQL? कौन सी कंपनी ने बनाया था? माइक्रोसॉफ्ट. No. IBM. So originally SQL was developed by IBM. When it was developed, it's not a new language. It was developed in 1970s. I think हम तब तक born भी नहीं होंगे जब ये develop हो गई थी. ठीक है. So it's not a new language first of all, but very popular. It has been in practice in the industry for the last 60 years, 50 years. So developed by IBM
in 1970s. Okay. And after that, because of the popularity, because of the ease of learning, इसको सीखना इतना आसान है, it was adopted as a standard. Clear? Any questions? SQL by developed in 1970s by IBM. ठीक है? Okay. IBM के International Business Machine, it's a company. Okay? International Business Machines. ये एक टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट से भी बड़ी कंपनी, राइट? इनफैक्ट माइक्रोसॉफ्ट एंड एप्पल दे वर इंस्पायर्ड बाय आईबीएम, हैं? आज भी बहुत बड़ी, राइट? बट देयर मेन ऑपरेशन इज इनटू हार्डवेयर, ज्यादा इनका काम हार्डवेयर में होता है. हार्डवेयर मतलब सर्वर्स, ये सब बनाते हैं, ये मेन फ्रेम सर्वर, ये सब बनाते हैं, सुपर कंप्यूटर. एफपी HPSS, what is that? I have not heard of it. IBM अपना डेवलप ब्रांड यूज करता है. ठीक है, so far background, history, okay. Let's come back. So we saw it's used for storing, manipulating, and retrieving data in the relational data. SQL is the standard language for relational database system or relational database management system like MySQL, MS Access, Oracle, SQL Server uses SQL as the standard database language. यही मैंने बताया आपको, right? Why SQL? Allows users to access data in the relational database management system. Okay, so if you will learn SQL today, you will be able to access the data which is stored in the RDBMS using that language. Allow users to describe the data. Data को describe कर सकते हो आप, ठीक है? Allow users to define the data in the database and manipulate that data. Manipulation कर सकते हो data को. And allow users to create and drop tables and databases. You can create tables, you can create databases, you can drop databases, you can delete tables. All these operations related to tables you can do using SQL. Any questions so far? Now let's see the structure. So this is what I have already told you. What do we call? Fields are nothing, columns. ठीक है, और रोज को हम क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड्स. और डेटा स्टोर होता है टेबल की फॉर्मेट में, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में, या फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स के. ठीक है, और इसको एक्सेस करते हैं हम डेटा जब आरडीबीएस में टेबल में पड़ा हुआ है यूजिंग एसक्यूएल. मैं आई विल राइट ए क्वेरी और इससे डेटा को मैं रिट्रीव कर सकता हूं. ठीक है. नाउ लेट्स सी वन मोर थिंग. SQL क्वेरी आप लिखते हैं. व्हाट डू वी राइट? वी राइट SQL क्वेरी. SQL क्वेरी क्या होती है? क्वेश्चन पूछते हैं. ठीक है, हम क्वेश्चन पूछेंगे और वो प्रोसेस होगा क्वेरी लैंग्वेज प्रोसेसर से, और डेटाबेस में जाएगी क्वेरी और वहां से डेटा रिट्रीव. ठीक है, बट वो क्वेश्चन पूछने के लिए हमें वो लैंग्वेज सीखनी जरूरी है, राइट? जैसे मैं आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछूंगा, आप जवाब दे दोगे, लेकिन अगर मैं आपको फ्रेंच में पूछूं तो आप नहीं जवाब दे पाओगे, राइट? So we have to know that language, right? And I told you SQL is the most easiest language to learn. Why? Because it is just like English, right? The way we speak English, you have to write the query in the same manner. So ऐसा नहीं है कि जो आप query लिखने वाले हैं वो completely unrelated है किसी language में, right? So the way you will ask questions in English, the same thing you will write in exactly, not exactly, somehow you will write the same in the query. Okay? And that is why SQL is the most easiest language to learn. First of all, why? Because it is just like English. Okay? That is the first reason. Second reason why it is the most easiest language. It is not case sensitive.
Case sensitive means you write it in uppercase, you write it in lowercase, no problem. Your query processor will understand. So it is not, it is case insensitive. Insensitive मतलब doesn't matter. आप छोटे में लिखो, बड़े में लिखो, कोई problem, right? Third, इसमें हमें स्पेसिस का भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं. What do you mean spaces? Indentation, right? So space हमें ध्यान रखोगे. आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखोगे, जैसे पाइथन सीखोगे. In Python, even the spaces is a part of the syntax, right? If you give one space, which is, if it is required, you give only one space. If you give two spaces, Python will generate an error. So even in programming language Python, which is the most popular for data science, there even the spaces have a meaning. Indentation is a part of syntax. If you give two spaces instead of one, it will generate an error. But here you don't need to be worried about spaces. You don't need to be worried about indentation. एक space दो, दो space दो, कोई problem नहीं है. It will understand. It will not give you any error. So I can say that it is a loosely typed language. Loosely मतलब कहीं पे भी आप लिख सकते हो, ठीक है. एक स्पेस दे दो, चार दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. लूजली आप लैंग्वेज लिख सकते हो. एक लाइन में लिखो, मल्टीपल लाइन में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं. Is that clear? So that is why SQL is the most easiest programming language to learn.